यूक्रेन रूस जंग विचाले अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत संबंधी वड्डा बयान दिता है। वाइट हाउस विच एक अहम बैठक नूं संबोधन करदिआं बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन उत्ते रूस के हमले खिलाफ वैसट वल्लों कीतीआं गईआं कार्रवाइयां ते भारत का रवैया कंबाऊ पुणे वाला रहा है, भाव भारत ने कमजोरी विखाई है। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ है कि भारत क्वाड सुरक्षा समूह का हिस्सा है, जिस विच उस नाल अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान भी मैंबर हैं। बाइडेन ने कहा कि क्वाड समूह के मुल्कों विचों आस्ट्रेलिया और जापान ने रूस खिलाफ बड़े मजबूत फैसले लिए हैं, पर भारत का रवैया कंबाऊ पुणे वाला रहा है। Being able to split NATO, he never thought NATO would stay resolved, stay totally, thoroughly united. And I can assure you, NATO has never been stronger or more united in its entire history than it is today, in large part because of Vladimir Putin. And but you know, in response to his aggression, there has been we presented a united front throughout NATO and in the Pacific. The Quad is, with the possible exception of India being somewhat shaky on some of this, but Japan has been extremely strong. So has Australia, in terms of dealing with Putin's aggression. We presented a united front throughout NATO and the Pacific, and you did a hell of a lot to help us impose sanctions and incur costs, real cost, on the Russian economy. And we're seeing now that it mattered. It was really important what you all did, not every one of you, but I'm not suggesting you all had to, but those of you who did step up, it made a big difference. And I'm personally, as president, grateful for that. बाइडेन ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਰੂਸ ਹੈ। रूस नाल इस सांझ के चलदियां ही भारत ने इस जंग विच रूस विरुद्ध कोई कदम नहीं चुकिया है, जिस तो अमेरिका नाराज़ है।